Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are solving a very interesting question from class 9 mathematics, question number 13. This consider the function gx is equal to mx square plus n, where m and n are constant numbers if g bracket x is equal to 20 and g bracket 0 is equal to 5. Find the values of m and n. This question will help you understand how to find out the unknown constant in a linear equation. This is a very extremely useful concept in algebra and real life. This question is very simple and very easy question, and it's also very important according to the board point of view. They given us the function gx, write the function g bracket x is equal to mx square plus n. This is an m and n are constant. We are going to find the value of m and n variable. They also given us two values. उन्होंने कहा कि अगर हम x की वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट करेंगे we get the function result 20. Let's take it. Substitute the value x is equal to 4 into the function because they given us in the question statement. x की जगह 4 given है means we are going to substitute the value of x is equal to 4. g bracket 4 is equal to m. Rather than x we are going to substitute 4 square plus n. Now, they also says that in the question statement g bracket 4 is equal to 20. तो g bracket 4 की जगह हम 20 सब्सटीट्यूट कर देंगे क्योंकि ये हमें गिवन है. m 4 square means 4 multiply 4 which is equal to 16. We get is 16 plus n. 20 is equal to 16 multiply and we get 16m plus n. इसको सब अरेंजमेंट ऑर्डर में लिख देंगे. 16m plus n is equal to 20. We get the first equation when we substitute the value x is equal to 4. Now this is and g bracket 0 is equal to 5. अब हम इसको यूज़ करेंगे. g bracket 0 means we are going to substitute the value of x is equal to 0 into this function. g की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस फंक्शन में. g x is equal to mx square plus n. x की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे. सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 0 m x की जगह 0 स्क्वायर प्लस n. g ब्रैकेट 0 की वैल्यू क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है 5, तो हम इसकी जगह 5 सब्सटीट्यूट कर देंगे. 5 0 स्क्वायर मीन्स 0 0 मल्टीप्लाई m वी गेट 0 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई इट बिकम 0. नाउ 5 इज इक्वल टू n and we get the value from the second equation n is equal to 5. We get the value n is equal to 5. n की वैल्यू हमें बहुत आसानी से मिल गई. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1. n की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे. वी गेट द वैल्यू ऑफ m. टेक द फर्स्ट इक्वेशन 16m प्लस n इज इक्वल टू 20. सब्सटीट्यूट द वैल्यू n इज इक्वल टू 5. 16m प्लस 5 इज इक्वल टू 20. 5 कॉन्स्टेंट है. हमने m वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम कॉन्स्टेंट को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे. इट्स बिकम 20 माइनस 5. पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव. 16m is equal to 20 minus 5 is equal to 15. अब 16m का मतलब है 16 मल्टीप्लाई विद m. 16 कोफिशिएंट है. जब इस इक्वेशन की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा. m is equal to 15 by 16. कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन चेंज इनटू डिवीजन. वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट m is equal to 15 by 16. सिंपली क्या था, दे गिवन अस द फंक्शन. Just put the values provided in the question statement. X is equal to 4, we get the first equation. X is equal to 0, we get the second equation. Then by using the second equation, we get the value of n. Then substitute the value of n in equation 1, we get the value of m variable. I hope this explanation made it clear for you. If it helped, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.